Chapter number 5, string manipulation. We have covered some topics, basic things related to string. String is nothing but it is a group of character or whatever thing like characters, group of characters or digits, whatever things you have written inside either single quotes or double quotes, that is considered as string. That is considered as a string. Or string is a immutable type. Immutable type means if we want to change the value in any place or in any character of string, then we cannot change. Because string is a immutable type. Immutable means जो भी वैल्यू आपके ने स्ट्रिंग में दे दी है उसको आप बदल नहीं सकते हो. इफ यू वांट टू चेंज होल स्ट्रिंग, so you can change whole string means suppose that first time you have taken str1 equals to abc. Suppose you have taken str1 equals to abc means the value of str1 is abc. Then you want to change its value like str1 equals to xyz. You can change because here whole string is replaced with new one. Means abc जो है वो xyz के साथ replace हो जाएगी. It is possible. Or suppose that you want to change any character from abc, like first time the value of str1 equals to abc and you want to write like dbc, means in place of a you want to write d. It is not possible because string is a immutable type. मतलब किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर की जगह आप नया कैरेक्टर प्लेस करना चाहते हो तो इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ immutable. Immutable है तो नहीं होता. Look this. You know that the Python string are characters enclosed in quotes of any type, either single quotes, double quotes, triple quotes, any type of quotes. So that is considered as a string. Like first, an empty string is a string that has zero characters. Means empty string means if you simply you have written like open quotes and close quotes. मतलब क्लोज कोट्स जो है आपके सिंगल कोट्स आपने ओपन किए हैं, सिंगल कोट्स आपने क्लोज कर दिए हैं और नथिंग यू हैव रिटन इनसाइड दिस, दैट मींस इट्स लेंथ इज जीरो. उसकी लेंथ क्या होगी? जीरो, बिकॉज देयर इज नो कैरेक्टर प्रेजेंट. तो जीरो इज द कैरेक्टर, तो जीरो इज द लेंथ. देन पाइथन स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल टाइप. इम्यूटेबल टाइप मींस इफ यू वांट टू चेंज इट कैन नॉट चेंज. मतलब चेंज करना चाहते हो लेकिन चेंज हो नहीं सकता क्योंकि वो इम्यूटेबल टाइप का है, पॉसिबल ही नहीं है. देन indexing of Python. In case of indexing, we have covered two types of indexing. One is forward indexing and second one is backward indexing. The indexes of a string begins from zero index. Index start from 0 to length minus 1. Means suppose that you have written Python, Python, means total 6 characters are present in Python. So the length of Python is 6. But string start with 0, means start from 0. तो finish at कहाँ पर कम finish होगा? 5 में, because total length of Python is 6. देखो Python, total 6 characters are present in Python. So length of string, length of Python is 6. But according to the index wise, its indexing of string begins from 0. Start 0 से होगी, कहाँ पर खत्म होगी? Length minus 1. तो length is 6, 6 minus 1, that means 5. So start from 0, finished at 5. That is called forward. Forward direction means forward indexing. Similarly, backward indexing start from -1, -2, -3 to the minus length. कहाँ शुरू होगी? -1 से स्टार्ट होगी और फिनिश कहाँ होगी? माइनस लेंथ में होगी. दैट इज कॉल्ड backward direction, means backward indexing. This much we have covered in the previous section, in the previous chapter. So आज जो start करेंगे that is called traversing of string. How we will traverse? Look this. Name. Name is a string variable. Its value is superb. Its value is superb.
Superb is written inside double quotes. Inside double quotes. That means it considered as a string. 1, 2, 3, 4, 5, 6. The length of this string is 6 because 6 characters are present in this string. Total 6 characters are present in this string. And if we are talking about forward indexing, so first index is my 0. Then second one means index of u is 1, index of p is 2, index of e is 3, index of r is 4, and index of b is 5. So total length of this string is 6, but start from 0 index and finish at 5. So fifth is a last index. Then for ch in name, for is a loop. It is a part of iterative statement. दिस टॉपिक वी हैव कवर्ड इन कंडीशनल एंड इटरेटिव स्टेटमेंट चैप्टर. ये चैप्टर जो हमने पढ़ा था उसमें कवर किया था. फॉर लूप. ch is a variable in name is a string, so it will pick one character at a time. The value of ch, first time it will pick s, so print ch, so it will print only s. After that ends with and or inside it and लिखा है, इनसाइड इट एक डैश बना हुआ है, इसमें डैश दिख नहीं रहा आपको, डैश बना हुआ है. देन इसमें डैश लग के आ गया, एस डैश. देन अगेन इट गोज एंड देन यू. यू इज द नेक्स्ट कैरेक्टर, तो वैल्यू ऑफ ch इज यू. देन it will display u. After that dash means hyphen. Similarly next character is p. P it will take, then it will display p. Similarly hyphen sign. Next character is e. Next character is r. Then after that b is the last character. After that no character is present, stop the execution. So in this manner you have to print one character at a time. एक बार में आपने एक कैरेक्टर प्रिंट कर दिया, जबकि स्ट्रिंग क्या थी आपकी, सुपर्ब एक साथ थी. आपने पहले s लिखा, then end with hyphen, then end with hyphen, end with hyphen, like this. So first s hyphen u hyphen p hyphen e hyphen r hyphen or at last b. This in this manner you can traverse your string. Then next question. Next question. Program to read a string and display it in reverse order. Means first you have to take value from user and print its reverse order like this. Look, this is the Python. Python is written like this, python, but we want output like nohtyp, means in reversing order. Means सबसे पहले n आए, after that o, then h, then t, y and p in separate line. How it possible? For this we have a program. Look this program. String 1 input, enter a string. Whatever thing you have to take through the input statement, it comes as a string. तो इनपुट स्टेटमेंट के थ्रू आप कोई भी चीज लोगे इनपुट फंक्शन से, क्या आएगा, स्ट्रिंग आएगा. तो स्ट्रिंग 1 आ गया आपका. प्रिंट string 1 in reverse order. Reverse order is, look this, the is written in double quotes, so it is a message. It prints just like this, the ऐसे print हो गया. Then in reverse order is, it is also written in double quotes. That means in reverse order is a message, but here string 1 is written. Instead of that here क्या लिखा हुआ है, Python, because the value of string 1 is Python. String 1 की जो value थी हमने Python enter करी है. Look this, the value of string 1 is Python. So instead of string 1 it is written Python. The Python in reverse order is means जब आपने डबल कोट्स नहीं लगाया है तो इसका मीन्स उस वेरिएबल की वैल्यू डिस्प्ले करेगा. This time it will display the value of variable. इसकी वैल्यू डिस्प्ले करेगा. Then count the length of the string. For this we have len function. Len function means length is a function to count length of the string. So this time the length of this Python is 6. Length of this Python is 6 because 6 characters are present. python. Total 6 characters are here. So 6 character is present. Then the length of this is 6. इसकी जो length हो गई वो 6 हो गई. Then for a in range -1 in bracket
minus length minus 1 comma minus 1. That means here we are following backward indexing. Here we are following बैकवर्ड काउंटिंग जैसे होती है वैसे बैकवर्ड इंडेक्सिंग है हमारे पास. स्ट्रिंग में दो डायरेक्शन होते हैं, फॉरवर्ड डायरेक्शन, बैकवर्ड डायरेक्शन से. If we are writing forward direction, to start from 0 and finish at length minus 1. Or if you want to write backward, to start from minus 1 and finish at minus length. चलेगा minus 1 से और finish कहाँ होगा, minus length में finish होगा. Look this. So first time the value of a is minus 1. ये start यहाँ से करेगा. Value of a is minus 1. Then string minus 1. String 1 minus 1 index पे क्या है, minus 1 index पे n. minus 1 index पे n, तो it will display n. Then print statement is used to print message or variable value in separate line. Separate line means अब जो आंसर आएगा वो नेक्स्ट लाइन में आएगा, नेक्स्ट लाइन में आएगा. देन यहाँ लिखा है minus 1. here minus 1 that means it is a step value. ये step value है, तो minus 1 plus minus 1, minus 1 plus minus 1, minus 1 में minus 1 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, give me response. minus 1 minus 1 minus 2. very good. minus 2 very good. minus 2 minus 2, so minus 2 is the next index, means next value of a. then string 1 minus 2, minus 2 index पे o, next value is o, तो minus 2 index पे o मिल गया. after that again minus 2 minus 3, sorry minus 2 minus 1, new value is minus 3, so minus 3 is the new value of a. then string 1 minus 3, तो minus 3 index पे क्या है, h, so it will display h. then minus 3 minus 1, that means new value is minus 4. minus 4, minus 4 is a new value. then string 1 minus 4, minus 4 में क्या मिल जाएगा, t, like this. clear. then minus 5 and then minus 6. is it clear? Yes sir. okay. then next question, next program to read a string and display it in the form. in the form means first column in a forward indexing manner. first column like first character, then second character, then third character, then fourth character, like this, means in a forward indexing. जैसे लिखा है पाइथन, तो पाइथन में python, और here in backward direction. backward direction का मीन्स क्या हुआ, last character, then second last character, then third last character, like this. just like try is a sample एक देखा try, तो it will display फर्स्ट वाला आंसर आएगा try, लेकिन इधर वाला कॉलम आएगा yrt. means we want to display two columns, value in two columns. first column in forward indexing manner और second one is in backward indexing. backward means पीछे से reverse order में, yrt. for this we have a program. look this, ये एक प्रोग्राम है इसका. look this. string 1 input enter a string. here string is python. string क्या लिया इसने, python लिया, तो value of str1 is python. then length of string is 6, because in python total 6 characters are present. so length of this variable is 6, value of this variable is 6. start from 0, this is for forward index. look this, we have two variables, one is I or second one is a. two variables are present here, one is I and second one is a. here I is for forward indexing. I जो काम कर रहा है वो forward indexing के लिए काम कर रहा है, and A is for backward indexing. A is for backward indexing, back side के लिए काम कर रहा है. so for this A in range start from -1, length minus length -1 -1. then print str string 1 I. so what is the value of I? what is the value of this I? value of I, P. value of I is 0. value of I is 0. here
it is written here, a value of I is 0. Then string 1 0 index. What is the value in 0 index? P. So P. it will display P. Value of I is 0 and value of this string 1 0 index, that is 1. मतलब 0 index पे जो value है that is called P. 0 index पे value P है, लेकिन I की value तो 0 है. I denotes index. I की value 0 है. Yes. Then for backward slash T, that is for horizontal space. इसके बाद थोड़ा सा space देने के लिए. After that string 1 A. String 1 A. तो value of A is value of A is -1. very good, -1. Where are others? कहाँ गए बाकी लोग? रिप्लाई करना बेटा. स्ट्रिंग 1 -1. तो एट -1 इंडेक्स लास्ट में वैल्यू क्या है? n. तो इट विल डिस्प्ले n. देन इंक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ i plus equals to 1. It means I equals to I plus 1. I plus equals to 1, that means I equals to I plus 1. So new value of I is 1, because first time the value of I is 0, or 0 plus 1 is the new value. So 0 plus 1 means 1 is the new value of I. Then next value of A. What is the next value of A? अब इसके बाद जाएगा तो next value में क्या है? Step value -1. तो first value क्या है इसकी? -1. -1 -1 -2. -2 is the new value of दिस ए. इस ए की जो नई वैल्यू है वो क्या है? -1 है. फॉर ए इन रेंज -1, ब्रैकेट में -1 माइनस लेंथ -1, तो मीन्स दिस इज द फाइनल वैल्यू. ये तो फाइनल वैल्यू इंडिकेट कर रहा है कि यहां तक चलना है, लेकिन -1 से स्टार्ट किया. क्या करना है? स्टेप वैल्यू -1 करना है. तो -1 -1 -2. -2 is the new value of a. अब two variables we have, one is I, second one is a. न्यू वैल्यू ऑफ आई 1 किसके थ्रू हो गई थी? यहां हो गई थी. देखो आई प्लस इक्वल टू 1 लिखा था हमने. 0 प्लस 1, न्यू वैल्यू ऑफ आई इज 1. 1 हो चुकी है. सिमिलरली द न्यू वैल्यू ऑफ ए इज -2, बिकॉज प्रीवियस वैल्यू क्या थी? -1 थी, और स्टेप वैल्यू क्या है? -1 है. -1 -1 -2. सो -2 इज द न्यू वैल्यू ऑफ ए. देन अब प्रिंट लिखा है. प्रिंट string 1 I. String 1 I, that means string I की वैल्यू. What is the value of I? What is the value of I? Reply me. Once again, look this example. This example says that we want to display a string in this manner, means in a forward indexing manner or in a backward indexing manner. Means backward means reverse direction. This means this output is in reverse manner, means last value come first, like n will come first, after that second last, second position, third last, third position, like this. Clear? Now see this code. String 1 equals to input enter a string. Enter a string means you have to take value from the user. So in string manner, the first value is Python. Python is in string. The value of string string 1 is Python. Then length equals to length string 1. That means count the length of this string. Length of this string is 6, because 6 characters are present. 1 2 3 4 5 6. 6 characters are present here. 6 हैं. Then I equals to 0, means initial value of I is 0. Starting value मेरी I की 0 है यहाँ पर. Here we used two variables. One is I, second one is a. I is for forward indexing, means simple printing जो होती है python पाइथन के लिए I यूज किया है, and a is for reverse.
रिवर्सिंग स्ट्रिंग मीन्स लाइक दिस, इसके लिए हमने ए यूज किया है. So for this we used forward indexing या forward direction, और here for a means जो a है वेरिएबल उसके लिए बैकवर्ड डायरेक्शन यूज किया है. मीन्स स्टार्ट फ्रॉम -1, then length length of this string is -6. 6 minus 1 मतलब -6 -1 that means -7. so -7 is the last value. तो इससे एक कम चलेगा, तो चलेगा कहां तक, -6 तक जाएगा. स्टार्ट होगा -1 से और फिनिश होगा आपका -6 पर, बिकॉज ऑफ दिस लाइन. माइनस लेंथ -1, लेंथ की वैल्यू 6 है, -6 -1 दैट मीन -7, एक कम जाना है तो -6 तक जाएगा. देन स्टेप वैल्यू जो दी है वो नेगेटिव दी है, स्टेप वैल्यू नेगेटिव दी है मीन्स -1, तो -1 -1 -2 आएगी. देन -2 -1 -3 आएगी, -3 -1 -4 आएगी, -4 -1 -5, देन -5 -1 -6 लाइक दिस. तो ए की वैल्यू ऐसे चेंज होगी. फर्स्ट टाइम द वैल्यू ऑफ ए इज -1 एंड द फर्स्ट वैल्यू ऑफ आई इज 0. आई की वैल्यू मुझे 0 मिली और ए की वैल्यू -1. क्लियर. प्रिंट string 1 0, string 1 0 that means it will display p, python के लिए. Then \t is for horizontal space, थोड़ा सा गैप दे देगा. आफ्टर दैट string 1 a, वैल्यू ऑफ a is -1. तो एट -1 इंडेक्स क्या वैल्यू है, n, तो इट विल डिस्प्ले n. यहां तक क्लियर है, पहली वैल्यू क्लियर है. हाउ वी Yes, डिस्प्ले, sir. हाउ वी डिस्प्ले p and n. p is through I and n is through a. A. वैल्यू ऑफ i is 0 एंड वैल्यू ऑफ a is -1. यहां तक ये था. देन इंक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ i प्लस इक्वल टू 1. i प्लस इक्वल टू मीन्स इक्वल टू 1 मीन्स i इक्वल टू i प्लस 1. तो i की वैल्यू क्या है, 0. अभी i की वैल्यू क्या थी, 0 थी. 0 प्लस 1 दैट मीन्स न्यू वैल्यू ऑफ i इज 1. जो नई वैल्यू बन के आई i की वो 1 बन के आ गई. एंड देन व्हाट इज द न्यू वैल्यू ऑफ a. अब नई ए की जो नई वैल्यू आएगी, स्टेप वैल्यू हमारी -1 है, तो -1 पहली वैल्यू थी, -1 -1 दैट मीन्स -2 इज द न्यू वैल्यू ऑफ ए. अब ए की जो नई वैल्यू बनी है वो -2 है और आई की जो नई वैल्यू बनी है वो है 1. देन स्ट्रिंग 1 द वैल्यू ऑफ आई इज 1. आई की वैल्यू 1 हो गई है, तो 1 इंडेक्स में मुझे क्या मिलेगा, y. 1 इंडेक्स में y मिला तो इट विल डिस्प्ले y. एंड देन स्ट्रिंग 1 a की वैल्यू -2 हो गई थी, -2 मीन्स o. बैक साइड पर देखो रिवर्स ऑर्डर में o आएगा, -1 के बाद -2, इट विल डिस्प्ले o. नाउ इट इज क्लियर. Yes, sir. आई एम आस्किंग टू एवरीवन. Yes, sir. Yes, sir. ओके, Yes, sir. गुड. देन नेक्स्ट वैल्यू ऑफ i प्लस 1, i प्लस इक्वल टू 1. तो व्हाट इज द न्यू वैल्यू ऑफ i. अब क्या होगी नई वैल्यू, बताओ अब नई वैल्यू क्या होगी. व्हाट इज द न्यू वैल्यू ऑफ i. वेरी गुड आदित्य, आदित्य यादव ने रिस्पॉन्स दे दिया है. वेरी न्यू वैल्यू ऑफ i इज 2. Value of I is 2 because at 0 index we have covered, 1 index we have covered. After 1 plus 1 new value of I is 2, क्योंकि previous value 1 हो चुकी थी. अब 1 में 1 ऐड करेंगे तो नई वैल्यू I क्या बनेगी, 2 बनेगी. न्यू वैल्यू ऑफ I is 2. देन व्हाट इज द न्यू वैल्यू ऑफ A. A की नई वैल्यू क्या होगी, -3. वेरी गुड, -3. -3 is the new value of A. Then string 1 2. What is the value of string 2, t. सेकंड इंडेक्स पे t मिलेगा तो t डिस्प्ले करेगा. एंड द वैल्यू ऑफ -3 इज h, तो इट विल डिस्प्ले h like this. Similarly increment the value of I. अब new value of I is 4. no 3. I की वैल्यू 3 एंड वैल्यू ऑफ A Yes, sir. इज -4.
value of a is -4. Clear? So at 3 index value is h, or at -4 index value is t. Similarly, when we increment the value of I again, then I is 4 and the a is -5. So it will display O and Y. And the last, when the value of I, new value of I is 5 and a is -6, it will display N and P respectively. Is it clear? I am asking to everyone, it is clear? It is Yes, clear. sir. Clear. Okay, Yes, sir. good. Next is, okay, next is string operators. So this topic we also covered in previous chapter. We have two basic string operators. One is plus and second one is multiply. One plus operator is called concatenation operator. String concatenation operator. Plus operator is called string concatenation. Here we need both the operands of type string, like t, and second one is pot. T plus pot. So means if both the inputs are in string type, so it will concatenate. Concatenate means क्या हो जाएगा, मर्ज कर देगा, दोनों को कंबाइन कर देगा. ठीक है, तो आंसर इज टी पॉट. फाइनल आंसर इज टी पॉट. Clear? Like look this, 1 plus 1, that is called 11. 11 means 1 and 1 both are given in form of string. String, so final answer is 11 means 1 1. Similarly a0, this is the final answer. Then 1 2 3 is in string, abc is also string, so abc 1 2 3, 1 2 3 abc. Clear? Then caution. Caution means क्या क्या प्रॉब्लम आती है, क्या क्या ड्रॉबैक होंगे इसमें. कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं. देखो, if you have given numbers like 2 plus 3, then it will give answer 5. When you have not written quotes, जब वैल्यू कोट्स में नहीं है, वैल्यू कोट्स में नहीं है, तो इट इज कंसिडर्ड जस्ट लाइक इंटीजर नंबर. और इफ इट इज रिटन इन कोट्स, देन इट इज कंसिडर्ड एज स्ट्रिंग टाइप वैल्यू. देन ये कॉन्कैटिनेट कर देगा. तो यहां पर देखो, पहले वाले में एडिशन, सेकंड वाले में कॉन्कैटिनेशन. Then, but if the expression like this, first value is in string and second value is in integer, then it will generate error. Error is cannot concatenate str means string value and int object. तो string और int को दोनों को concatenate combine नहीं करेगा. ठीक है, combine तभी possible है when both the strings, both the value, both the operands are in string type. Then next operator is string replication operator. String replication operator means multiply, number of times, how many number of times you want to display same value. एक वैल्यू को आप कितनी बार प्रिंट करना चाहते हो. तो here we need two different values. One is a type of string and second value is a type of number. इसमें एक वैल्यू मुझे स्ट्रिंग में चाहिए और दूसरी वैल्यू नंबर में चाहिए. Look this example, like 3 into go. 3 into go. Go is written in string. 3 is written in number. That means it will display go 3 times. It will display go 3 times. मतलब replicate. Replicate मतलब duplicate. कितनी बार करेगा? How many times? 3 times. Number is given here. Then ABC multiply 2. That means ABC 2 times. 5 multiply at the rate. So at the rate 5 times. Simply this colon hyphen sign is 5 times. Then 1 2 times. A question, क्या क्या प्रॉब्लम है? When both the numbers are in integer, it will display 6. Then one is string and second one is in number, then it will replicate. And then when both the values are in string, then it will generate error. Means can't multiply sequence by non-integer type. Clear? तो इसको ये रेप्लिकेट नहीं कर पाएगा, मतलब इसे मल्टीप्लाई नहीं कर पाएगा ये. इज इट क्लियर?